Okay. So as we have studied fundamental right that has been started from Article 12 to Article 35. All right, we have studied about that. And it has been described under the Part 3 of the Indian Constitution, and DPSP has been explained in the Part 4 of the Indian Constitution. We have already studied that. All right. So when we're talking about the fundamental rights, then we must know there are certain provisions we need to know about that. Firstly, we have studied about like the basic what the definition of the state. Like what do we understand by the state? What is its definition? We have already studied this. Coming to the next part, we need to study about. We have studied about the fundamental rights like right to equality, right to life and personal liberty, etc. Like what are the basic fundamental rights and what are its nature? What are the features of the fundamental rights? We have already studied it. So while going through about all these parts, let's have a quick recap on the whole things in the total prescribed manner. So firstly, coming to the part of the right to equality, and this right to equality has been described under the Part 3 of the Indian Constitution, and it has been described from Article 14 to Article 18 of the Indian Constitution. All right. So when we're talking about and right to freedom is being started from Article 19. Okay. So when we have talked about right to equality, that we have studied that two concepts we have already studied. Like that speaks about the equality, means that indicates that everyone is equal in this universe, everyone is equal in India. So when we are talking about the territory of the India, हम जब इंडिया कहते हैं तब ये बात का अंदाजा हमको रहना चाहिए कि इंडिया के अंदर हर कोई सेम ही है. एवरीवन इज इक्वल अंडर द टेरिटरी ऑफ द इंडिया. एंड हम किसी का भी कास्ट हुआ, जेंडर हुआ, किसी का टाइटल हुआ, अपना कास्ट, रेस, रिलीजियन, लोकेशन, ये सब के बेसिस पे ना हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. एंड दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट वी हैव स्टडीड अंडर द राइट टू इक्वालिटी व्हिच इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 to Article 18 of the Indian Constitution. एक second, guys. So, guys, we are studying about the fundamental rights, and when I was talking about the right to equality, I have told you that right to equality that is described from Article 14 to Article 18 of the Indian Constitution. Article 14 से Article 18 तक ये right to equality का बात की गई है. तो इसके अंदर हमने जो equality के बारे में पढ़ा था कि according to right to equality, everyone should be equal. हर कोई इक्वल होता है एंड हर किसी को इक्वली ट्रीट. इवन इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर ए मिनिस्टर, देन ऑल्सो यू आर लायबल टू गेट योर पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स यू हैव डन. अगर आपने कोई गलती की है तो आपको पनिशमेंट अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड दैट कम्स अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ, जहां पे लॉ के सामने हर कोई एक होता है. आपने जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस कि मेरा ज्यादा पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज, राइट? एंड एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर मेरे को मर्डर का पनिशमेंट के लिए 10 साल का सजा मिलेगा, तो अगर आप एक बड़ा सा मिनिस्टर भी है तो भी आप इसके लिए 10 साल का सजा ही मिले. एंड दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड अंडर द इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड द सेकेंड पॉइंट कम्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जहाँ पे हमने ये लॉ हर किसी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है. देन यू मस्ट आस्क मी दैट कि लॉ, आपने बोला कि लॉ प्रोटेक्ट्स एवरीवन इक्वली. तो क्वेश्चन मस्ट अराइज कि लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है, हाउ द लॉ प्रोटेक्ट्स एवरीवन इक्वली. यस, द आंसर इज वेरी सिंपल. सी, when we are talking about the equal protection of the law, then you know that अगर फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए यू बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली एंड यू डोंट हैव मनी टू टेक योर ओन लॉयर, आपको अपने के लिए लॉयर अपॉइंट करने का पैसा नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ.
जहाँ पे आपको ये बोले अगर आपके पास पैसा नहीं है देन इट इज द स्टेट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो जहाँ पे स्टेट आपके लिए लॉयर अपॉइंट, राइट। तो अगर आप एक रिच इंसान है, इफ यू आर फाइनेंशियली रिच, इफ यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, देन लॉ आपको जितना प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं एक दुबला इंसान हूँ या फिर आई हैव नो पावर, आई हैव नो मनी, आई एम पोर, आई एम फाइनेंशियली अनस्टेबल और आई एम प्रोफेशनली वेरी वेरी अनस्टेबल, देन इन दिस केस ऑल्सो टू मेक मी अप टू योर स्टैंडर्ड, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आप रिच है, आप अपने लॉयर अपॉइंट कर लिए, तो वहां पे मेरे को भी एक लॉयर का जरूरत है टू फाइट अगेंस्ट यू, टू रीच अप टू योर स्टैंडर्ड। आपके स्टैंडर्ड तक आने के लिए मेरे को जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट का जरूरत है वो मेरे को कौन प्रोवाइड करेगा? मेरा स्टेट प्रोवाइड करेगा। एंड टू गेट दोज बेनिफिट फ्रॉम माई स्टेट इज माई फंडामेंटल राइट, गॉट इट? एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। बेसिक एग्जाम्पल पे ये समझिए कि अगर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा दो बच्चे हैं, मेरा एक बच्चा खुद बहुत सारा पैसा कमाता है, महीने का 200 रुपये, दूसरा बच्चा महीने का 50, तो मेरा क्या ड्यूटी है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एज ए प्रोटेक्टर मेरा ड्यूटी है, अगर मेरा एक बच्चा को 200 रुपया मिल रहा है तो वहां पे उसको मैं जितना प्रोटेक्ट, दूसरा बच्चा जिसको 50 रुपया मिल रहा है, अगर मेरे को वो दूसरा बच्चे के साथ उस बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना है तो बाकी का 150 रुपया भले ही मैं अपने हाथ से दूं, लेकिन मेरा ड्यूटी है मेरा दोनों बच्चों का एक साथ ख्याल रखना, दोनों को इक्वली ट्रीट करना, दोनों को इक्वल अटेंशन देना। अगर मेरा स्ट्रांग बच्चा को ज्यादा अटेंशन का जरूरत नहीं है तो ठीक है, बट अगर मेरा मतलब जो बच्चा वीक है उसको ज्यादा अटेंशन ज्यादा केयर का जरूरत है, तो ये मेरा फर्ज है, भले ही मेरे को उसको ज्यादा 150 रुपये तो मेरे को देना है, क्योंकि मेरे को उसका ख्याल रखना मेरा ड्यूटी है। समझ में आ गया? तो अभी आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा कि मैं हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, वी हैव बीन मेड ए लॉट ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉ का तैयारी की है हमने। वुमेन का प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट एक्ट का मॉडिफिकेशन, आपका पोक्सो एक्ट, आपका पोस एक्ट हो गया। देयर आर मल्टीपल एक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो क्यों? बिकॉज दे आर हियर, एक बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है और दूसरा एक दुबला बच्चा जो कि बहुत कम मतलब फिजिकल वाइज वीक है थे। इन दिस केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो दूसरा बच्चा है दे आर इक्विवेलेंट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि ओमेन हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, जिनको डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पोटेंशियल का जरूरत है, ज्यादा स्कोप का जरूरत है। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड देम प्रॉपर स्कोप and to compensate them financially, make them equivalent with the higher portion of the society। समझ में आया? तो ये रहा आपका राइट टू इक्वालिटी। देन आपका आता है राइट टू फ्रीडम, जहां पे हमने बात किया था which comes under article 19 to article 22 of the Indian Constitution। ओके, तो इसमें अंडर द राइट टू फ्रीडम बेसिकली 6 प्रकार का राइट के बारे में पढ़ा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, देन पढ़ा था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन पढ़ा था फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एंड एट लास्ट वी हैव स्टडीड फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। गॉट इट? सो दीज आर बेसिक फंडामेंटल राइट्स which we have studied under the article 19 to article 22, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को अपने दिल की बात लिखे। दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपना तरीका एक्सप्रेस करने का पूरा हक होता है, जस्ट लाइक टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर इमोशंस, टू एक्सप्रेस योर माइंडसेट्स,
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक लिखा, इस बुक के थ्रू मैं अपना भावनाओं को बोल दिया लोगों के। फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रोड्यूस्ड ए म्यूजिक, दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए मैं एक मीमर हूँ, मैं मीम के थ्रू सोशल मीडिया एक्सप्रेस, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं राइटिंग के ब्लॉग के थ्रू सोशल मीडिया पे मेरा भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। मान लीजिए मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, या फिर एट द एंड मैं एक इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हूँ, या फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। So whatever I am, the point is I have been instructed to do certain things, to express my speech, to express my freedom, to express my emotions. मेरा दिमाग के अंदर, मेरा दिल के अंदर जो कुछ भी है, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार मेरा रहता है, एंड दैट कम्स अंडर योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Clear? This freedom of assembly without arms. Okay. So when it is comes to the part of the freedom of assembly without arms, then we need to understand that when it talks about the freedom of assembly, that means get together. Like there is a group of the people having the same kind of need, same kind of mentality. They make an assembly. So here, this right to make an assembly is given under the constitution, but that assembly should be without any arms. मतलब वो कोई भी सोशल एजिटेशन को क्रिएट नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, एंड दैट शुड बी फॉर द पब्लिक बेनिफिट, एंड दैट assembly should not harm the peace of the public. Then only the freedom of assembly is being approved under the Indian Constitution. Clear? So the next point comes freedom to practice any profession and freedom to reside any part of the country. We have already studied that freedom to practice any profession. That means I don't have any restriction to follow any particular religion over. You know, India is a secular country, and we have already studied this under the preamble of the India, that secularism is the basic part of the India. So when we are talking about the secularism, we need to understand that in India, there are different kind of the people who are staying together. It doesn't matter I am a Hindu, I am a Muslim, I am a Christian, I am a Parsian. Under what religion I belongs to, that doesn't matter over here. The thing matters that what profession, what religion I want to pursue. If I am a Hindu, I would like to pursue my religion. If I am a Muslim, then I would like to pursue my own religion. If I am a Sikh, then I can pursue my own religion. I don't have any barrier on this. मैं हिंदू हूँ तो मंदिर जाऊंगी, सिख हूँ तो मुसलमान हूँ तो मस्जिद जाऊंगी, ये मेरा got it. And the last point is freedom to reside any part of the country, and that part is also very very important. किसी को भी कंट्री का कोई भी रीजन में रहने का पूरा हक है, until and unless that part is a reserved or restricted area, or that person who is residing at any part of the country, that person is creating any nuisance or social disturbance to that community. मान लीजिए आई एम स्टेइंग एट ए पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, ओके, एंड छत्तीसगढ़ का ट्राइबल एरिया, the people where they are staying, I am staying at that location, and I am intentionally making harm to them. So in that case, am I eligible to stay according to my choice? No, because I am causing danger to the society. So I should not be permitted to stay over there, right? So even if you have the right or freedom to stay according to your choice, that should be reasonable. The area you are deciding to reside or to stay, that should not be restricted, or you should not be the reason of harm to any particular person. Here, then we have studied about the right against the exploitation, and that has been explained अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा था दैट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ऑलरेडी स्पीक्स अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, द चाइल्ड लेबर, द फोर्स्ड लेबर,
and employment of the children in the factories, and the children under the 14 years and their conditions of the work. About these things this already speaks about. And under the right against exploitation, we have already discussed that when it is talking about the child who is below 14 years, a child below 14 years is not allowed to work any kind of the hazardous places. ही ऐसा जगह जहाँ पे उस बंदे का या वो लड़की का जान को कि 14 साल के नीचे है, उसको उस जाने पे जाके उस जगह पे जाके काम करने का मतलब that is the violation of the fundamental right, because under the right to education it has been told that everybody under the 14 years of age, 14 साल के अंदर जो कोई भी है पूरा everyone should read। और अगर कोई काम करने आ भी गया तो भी उसको कोई भी hazardous इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया। पहली बात। एंड दूसरा बात, अगर वो कोई भी किसी भी तरह का काम करता है that should be informed to the family of that particular person। एंड तीसरा चीज है, अगर वो बंदा या बच्चा 14 साल से ज्यादा है then that person can work but that should not be hazardous in nature। मतलब पहला चीज है, चाइल्ड लेबर को इसने स्ट्रांगली प्रोहिबिट करके रखा है। एंड ये बोला गया है कि अगर कोई काम करता भी है तो जो इंडस्ट्री में वो काम कर रही है या कर रहा है वो हैजर्डस नेचर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी ऐसा चीज प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जिससे चाइल्ड का जिंदगी को किसी भी तरह का विपत्ति का आशंका हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, राइट अगेंस्ट freedom of religion, article 25 to 28, and we have already decided about this. When we are talking about the right to freedom of religion, then we need to understand that as India is a very, very secular country, so on article 25, 26, 27, 28, it has already been spoken that people from all region, people from all kind of religion, they are staying in India together, and that too with a good brotherhood, with a good companion, right? So when it comes to the point of right to equality against the religion or maintaining a secularism, then the answer is India is a secular country and the secularism of India makes a good bond with all the Indians. And we have studied under this right to freedom of the religion that everybody under every religion can pursue their own choices. And not only that, anybody who belongs to a particular religion, they can establish their own religious institution, but that institution should not teach any kind of non-violent things. And secondly, that institution should not stop anyone from other religion to study in that particular institution. Here, then we have studied about the cultural and educational rights, and that is we have studied under Article 29 to 30 of the Indian Constitution. And when we are coming to the point of the right to cultural and educational rights, then we need to understand that the cultural and educational rights that has been protected in the cultural and linguistic manners, and that means our heritage, our culture, our education that should be protected, right? And the educational rights exactly speaks that the education should be granted to everyone without any discrimination. For example, you imagine that for example, you are a student, you are going to your school, you are going to your college, you are studying, you are having a good life. But think about those people who are unable to go to the school due to their financial crisis. Think about those people who are not able to study. So here when we are talking about the educational rights, that means everyone has the right to education. हर किसी को हर जगह पढ़ने का पूरा हक। Got it?
And about coming to the part of the cultural rights, we need to understand that the cultural heritage of the India that should be protected everywhere. इंडिया का जितना सारा भी कल्चरल हेरिटेज है, natural process places है, that should be protected and cared. Clear? Then comes right to constitutional remedies, that comes under Article 32 to Article 35 of the Indian Constitution, and we have already studied about this. Right to constitutional remedies means you can file a case if there is any kind of violation of your fundamental rights, and that violation can lead to take that person to the court of law if there is any kind of disturbances are over there. Clear? And then we have studied about the DPSP, Directive Principle of the State Policy, and that we have discussed under the Part 4 of the Indian Constitution. Okay, just 1 second, guys. I am just yeah. Okay, so this was about the fundamental rights we have discussed. Now we will be going to the new point. I mean, we are going to study a new topic, and that is the union. Okay, and under the concept of the union, we are going to study about the president of the India. So you know who is the president of the India? Okay. So if you ask me, like, what is the president of the India? The president is the elected body or not? Yes or no? Yes. The president is the elected body of the India and the supreme authority of the India. जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड है, वैसे ही अगर आप पूछते हैं कि तो हु इज द किंग ऑफ इंडिया, इंडिया हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, द पर्सन हु इज द master of everything, the person who is the king of everything. Got it? So, coming to the part of like the president of India, there shall be a president of India. And we should understand that ये जो president हमारे रहते हैं ना, ये ऐसे वैसे नहीं बन जाते. We have to choose our own president because India is a democratic country. India एक democratic country है जहाँ पे इसका citizens ना हर एक डिसीजन लेते हैं. तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट को चुनने का काम आता है, इन दैट केस ऑल्सो द सिटीजन्स चूज देयर ओन प्रेसिडेंट itself. Yes, just 1 second, right? So I was telling about the president of the India. Yes. So what I was telling, and as this is a independent country, as we have already studied, India is a country where everything is being done by the election only. So यहाँ पे हर चीज इलेक्शन के थ्रू होता है. So the answer is the president is also the elected body of the India. President को भी elect किया जाता है. You must ask me that who elects the president? The selected persons of the legislative assembly and the house of the parliament, they choose the president. जैसे होगा अभी, जैसे कि हमारा जनरल इलेक्शन हुआ है, like there are few states जहाँ पे स्टेट इलेक्शन भी हुआ है as well as सेंट्रल इलेक्शन भी हुआ है, and there are few countries जहाँ पे there are few states जहाँ पे सिर्फ आपका नेशनल इलेक्शन हुआ है. Got it? So when it comes about the election procedure or election body, then we almost know that when we're talking about the election procedure, then the election must be done through the ballot paper or through the voting machine. Must have got the idea about that, you know, like आपका voting system कैसे होता है आपको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा. So when there is a procedure of the voting, there is the procedure of the selection, जिसके थ्रू आप अपनी अथॉरिटी को चूज करते हो. You choose your own authority, you choose your own electing body through the process of the election. यहाँ पे स्टेट इलेक्शन हुआ है होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा उड़ीसा में अभी विधानसभा और राज्यसभा दोनों का इलेक्शन एक साथ हो गए. सॉरी, लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो गया. देयर आर टू काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, वी हैव वोटेड देम, दैट इज द एमएलए एंड एमपी.
MLA means member of the Legislative Assembly and MP means member of the Parliament. So member of the Parliament, they are the bodies who are going to the House of the Parliament. जो लोगों को पार्लियामेंट के हाउस को शिफ्ट कर दिया जाएगा and they will be the they will be the elected body. Got it? So when we are talking about this thing, right, like MP election and MLA election, हम लोगों ने, and what do we understand by the MLA, member of the Legislative Assembly? Legislative Assembly means the state body, जहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर इलेक्शन होता है. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि आपको क्या पता है इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है? बाई कैमरा है. चलिए मैं आपको पूरा सीरीज बताती हूँ इलेक्शन का होता है. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के नीचे कौन है? उसके बाद प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर. ऑलमोस्ट बोला जाए तो प्रेसिडेंट इज द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द स्टेट, जिनको एक्चुअली पे क्या होता है ना, उनको कुछ चीजों का मतलब he actually doesn't take any particular decision. He just मतलब कैसे बोला जाए तो जो है प्राइम मिनिस्टर और उनका सेट बोर्ड ऑफ द मिनिस्टर, दे डिसाइड एवरीथिंग एंड प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट. वो अपना एग्री बताते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैं इस चीज के लिए मैं परमिशन देती हूँ. द प्रेसिडेंट जस्ट पुट हिज और हर साइन ऑन द पेपर कि हाँ ठीक है ये बिल को लाया जाए, ये चीज को किया जाए. तो उनके परमिशन के बिना कुछ चीज हो नहीं पाता, बट वो बोला जाए तो ही जस्ट गिव हिज परमिशन ऑन एनीथिंग, राइट. सो यहाँ पे प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर आपका लेजिस्लेटिव सॉरी आपका आता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पे हाउस आपका दोनों तरह का हाउस होता है. एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है आपका लोकसभा. इस चीज में आपने ऑलरेडी हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सॉरी पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने ये बात पढ़ा ही होगा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकसभा एंड रिसेंटली हमारा जो इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने अपना जो गवर्नमेंट बनाया, तो कौन सा इलेक्शन के लिए था? लोकसभा इलेक्शन के लिए था. समझ में आ रहा है? तो आपका जो मेंबर बॉडीज ने जिनको आप लोगों ने सिलेक्ट करके भेजे थे, who were they? They were the member of the parliament only. Got it? So they were the members of the parliament. आपने उन पार्लियामेंट का मेंबर्स को इलेक्ट किए थे कि नहीं? बिल्कुल किए थे. तो उन लोगों ने जब पार्लियामेंट को इलेक्ट हो गए, वो कौन सा बॉडी पे गए? दे फर्स्ट वेंट टू द लोकसभा. फिर लोकसभा से देयर आर फ्यू पीपल हु हैज बीन इलेक्टेड टू द राज्यसभा. तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस के बारे में बात करें तो अपर हाउस कौन है? राज्यसभा. लोअर हाउस कौन है? लोकसभा. तो ये लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों वो बन जाता है आपका पार्लियामेंट. और पूरा पार्लियामेंट सिस्टम का, पूरा कंट्री का सारा लेजिस्लेशन का जो कंट्रोल होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? ये दोनों हाउसेस कंट्रोल करते हैं. अगर हमारा कोई लॉ का या कानून का कोई भी बिल पास करना होता है, तो पहले वो बिल कहाँ पे पहले वो बिल को कहाँ पे साइन किया जाता है? लोकसभा में. 2/3 of the members of the Lok Sabha need to give their assent on the bill. 2/3 of the member of the Lok Sabha, after they give their yes mark on the bill, then the bill passes to the Rajya Sabha, and Rajya Sabha में जब वहां पे भी 2/3 members का वहां पे सिग्नेचर लग जाता है, तभी आपका कोई बिल लॉ में बदल जाता है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हाँ तो हम संवाद कर रहे थे बाई कैमरल इलेक्शन की टॉपिक में बोलना. चलिए हाँ, तो ये हो गया आपका सेंट्रल सिस्टम. जब हम स्टेट सिस्टम का बात करें तो स्टेट में बेसिकली दो तरह का मतलब हाउस होता है, विधानसभा एंड विधान परिषद. विधानसभा विधान नहीं होता है, बट विधान जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंग्लिश. तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं MLA, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली.
So after getting elected as the member of the Legislative Assembly, the people who has been elected as the members, they choose someone as the chief minister of the state. तो अगर आपको कोई पूछे कि चीफ मिनिस्टर कहाँ से इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आपका स्टेट का असेंबली है। जब हम प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आपने जो एमपी सीट के लिए अभी वोटिंग दिया था ना, अभी बीजेपी ने मेजोरिटी पे जीत गया। बीजेपी एंड एनडीए एंड आपका जो नीतीश कुमार का गवर्नमेंट, ये सारे मिल के जो गवर्नमेंट बनवाए हैं अभी, द रूलिंग पार्टी, उनका प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने? फिर से नरेंद्र मोदी जी बने, राइट। सो नरेंद्र मोदी, अगर आप मुझे पूछे तो हाउ नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड, वो भी कोई सीट से एज एन एमपी खड़े हुए थे, एंड ही ऑल्सो won द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज एन एमपी, देन with the consent of the whole party, he became the prime minister. तो chief minister कहाँ से बोलते हैं? From the members, elected members of the legislative assembly, with the consent of the all members, one person is getting elected as the chief minister, and the same way, with the consent of the all members of the parliament, the one person who is elected as the MP gets selected as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एंड अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इज बीन इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जितने सारे मेंबर है ना, सारे मेंबर्स प्लस आपका जो 29 स्टेट्स है इन द होल ओवर इंडिया, ये ऑल इंडिया पे 29 स्टेट्स का सारे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स भी वोट करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बोला जाए तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन पे ना बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम काम करता है। बाई कैमरल कैसे हुआ? देखो, एक हुआ आप, दूसरा हुआ आप। तो प्रेसिडेंट ये ऐसा नहीं कि सेंटर का जो दोनों हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, उन लोगों ने बस वोट दे दिया और इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट का। नहीं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो तो राज्य अपना 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 जो स्टेट होता है, इन द ईच रीजन ऑफ द स्टेट, इन द ऑल 29 स्टेट्स, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका मेंबर्स भी वोटिंग करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आया? सो प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ द इंडिया, वो इंडिया का सुप्रीम बॉडी है। ही इज द किंग, ही इज द मतलब ऑलमाइटी, उनके परमिशन के बिना कुछ नहीं होता है। ही इज द मास्टर। प्राइम मिनिस्टर आपका प्रेसिडेंट है। समझ में आया? तो चलिए, अकॉर्डिंग टू Article 52 of the Indian Constitution, the provision speaks, there shall be a President of India. All right. The second point speaks the executive power of the Union. So, what is the executive power of the Union? Let's study this. The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. तो यहाँ पे जो बोला गया ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन मतलब व्हाट? यूनियन मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का सारा लॉ, सारा रूल्स, सारा रेगुलेशन, सबका जो एग्जीक्यूशन का पावर है, दैट इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। एंड अकॉर्डिंग टू क्लास 2, without any provisions, president is the head of the defense system of the country. एंड कंट्री का डिफेंस सिस्टम में कितने तरह का डिफेंस सिस्टम है? एक होता है आपका आर्मी, दूसरा होता है नेवी, तीसरा होता है एयरफोर्स। देयर आर बेसिकली 3 डिफेंस सिस्टम्स इन इंडिया। एंड यू मस्ट रिमेंबर, प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ ऑल दीज 3 फोर्सेस। समझ में आया? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स सिस्टम ऑफ इंडिया। एंड तीसरा, गवर्नमेंट कोई भी तरह का लॉ का अमेंडमेंट करे, गवर्नमेंट कोई भी तरह का नया लॉ आना चाहे,
या फिर नया बिल का प्रोड्यूस करना चाहे, that law must need the sign of the president, and without the sign of the president any kind of precedent cannot become the law, and that cannot be executed. So it has been spoken that president is the head of the executive body of the union. He is the supreme commando of the union executive body. I hope you understood this. So this is explained in section 53 of the Indian Constitution, and from section 54 onwards we are going to study in the next class, means tomorrow. So this is all for today, and if you have any questions regarding this, matlab, recap about the fundamental duties, fundamental rights, DPSP, or like about this president, about the citizenship, anything you want to ask, you can ask.